मैं लॉल्स न्यूट्रिनो साक्षी। इंडिया में सर्किट बहुत खराब है। मैं अगर टीम को किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ मैं वो कर दूंगा। मेरा टीआर में इतना किसी के साथ बातचीत नहीं है कभी भी। जेली को सिर्फ मैं थोड़ा बहुत बातचीत किया हूँ और थोड़ा बहुत केवल से बातचीत हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। नहीं तो मैं उनको कॉल करके बोलता है, जैसे मैंने आई थिंक किया था अपने end से जो मैं इनपुट दे पाऊँ। ऑब्वियसली टेक्निकल बात में इनपुट नहीं देना नहीं देना सही नहीं है क्योंकि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम। बट हाँ, हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है मेरा इंटरनेशनल के हिसाब से मैं उतना शेयर किया था विस्गोड और आतंकी के साथ। मैंने ट्राई किया था आरू को बताने का, बट आरू का उस टाइम पे आई थिंक फोन रिंगिंग पे नहीं था, मतलब कॉलिंग कॉलिंग पे जा रहा था व्हाट्सएप पे। तो मैंने विस्गोड और आतंकी से थोड़ा सा पेट टॉक किया था। मे बी समहाउ इट हेल्प देम अ बिट टू स्टे मोटिवेटेड कि दुनिया तो गाली दे रही है बट वो सब गालियों को साइड रख के आप अपना बेस्ट दे के आओ। तो उन्होंने दिया। आई थिंक द थर्ड डे दे प्लेड फियरलेसली बट इट वाज नॉट इनफ। इनफ होता तो क्वालिफाई होते, सीधी बात है। Indian level is too low, man. It will take minimum 2 years to match. It will take. It's not about the time, bhai. It's about the opportunities. It's about the opportunities, bhai. और अभी भी बोलता हूँ यू नीड टू हैव अ गुड सर्किट यार। इंडिया में सर्किट बहुत खराब है। जब तक मैच मेकिंग नहीं होगी आपको आपसे बेटर टीम के साथ तो आप बेटर नहीं बन पाओगे। आई नो कि बहुत लोगों को ये नहीं आइडिया रहता है क्योंकि सब लोग वही मतलब एक्स वाई या कोई भी बंदा ऐसा बोल देता है कि यार चाइनीज रीजन तो अलग इसमें खेलती है और आप लोग हम लोग तो बीच में खेलते हैं, स्टिल लोग पबजी में अच्छा क्यों कर रहे हैं। बट दे आर द टॉप ऑफ द टेबल ब्रदर। दे डोंट नीड टू लर्न। मतलब मैं और न्यूट्रिनो हम लोग बेसिकली अभी डब्ल्यूसीजी के लिए रोज खेल रहे हैं, राइट। मैं लॉल्स न्यूट्रिनो साक्षी सिटी सुशी का नाम साक्षी है। तो हम लोग रोज खेल रहे दो एक दो घंटा। तो वही न्यूट्रिनो ने वही बोला। बाकी अगर आपको पता, न्यूट्रिनो इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ आवर कंट्री। उसने वही बोला कि यार स्काउट हम भी जब कॉर्डन में कम्पीट कर रहे थे इंटरनेशनली, गॉडल का जो न्यूट्रिनो है, तो उसने बोला कि हमने इंडियन सर्किट ही बंद कर दिया था फॉर 6 मंथ्स। तो तब जाके हम उस लेवल को मैच कर पा रहे थे। बीजीएमआई में वही करना जरूरी है। बीजीएमआई में डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल लेवल पे देखो, रोजमेरी ने को एक इंटरव्यू था। वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल प्लेयर पूरे वर्ल्ड में अभी इस करंट स्टेट पे। उसने बताया तुम्हारे से बेस्ट प्लेयर कौन है। तो उसने ऐसा बोला था कि जो बंदा मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स जीते। चैंपियनशिप जीतने को वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है, वैलिडिटी ज्यादा मिलती है बाहर। हमारे इधर ऑडियंस खुद कभी भी जीतने वाले को उतना वैलिडिटी नहीं देते। राय देन उस टूर्नामेंट में कौन एमवीपी बना उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं। बाहर कितने लोग एमवीपी बनते हैं किसको फर्क नहीं पड़ता है अनटिल वो चैंपियन है वो। कि इस गेम के अंदर एमवीपीज आर नॉट एन एलीट लेवल ऑफ अचीवमेंट। और अभी बहुत सारे लोग अकाउंट जाएंगे, तू नहीं बना तो को क्या पता ये हो। ठीक है भाई, मैं नहीं बनाऊँ भाई। जनरल में सोचो यार कि यू नीड टू विन चैंपियनशिप्स। वो हमें ऑडियंस को वो करना पड़ेगा। Where did the Indian teams lack? That's a long list, man. But if you want a perfect example of it, it would be today, or I guess yesterday now. Day 3, Group Red, Rondo, the final engagement. If you would have seen my reaction, I was not happy. I was very upset because it was clear what they needed to do. And that's when they showcase that they were just inexperienced at the global stage, which is completely understandable considering we haven't had India at the global stage for some years now. So, but overall, I'm just happy I was an analyst, or my inbox will be absolutely flooded by Indian fans right now saying that I'm biased and yeah, a bunch of nasty stuff that you guys usually send, which I like talking with the players, picking their brain, wondering what they're going to be doing. It's a little bit harder for players that don't speak English or Spanish, because then we have to use a translator, or I use Google Translate to talk to them sometimes. But everybody's pretty cool, man, and I try to be pretty cool with everybody. If anybody hates me, then that's their problem. Do you think Wolves can make it to the finals? There's a chance. There's always a chance, especially with only 12 matches being played. If you get lucky in one match, pop off, then you're going to put yourself in a pretty good spot to contend. But for Wolves, I feel like they need to narrow down their rondo. Definitely needs to narrow down their rondo. And I'm hoping next year, and maybe I shouldn't be saying this, but fuck it. I'm hoping next year the org, whatever org is with this squad, gives them more support in regards to personnel. Take that as you will. All right, maybe it's starting to get a little bit late here, but we're starting to get some stupid answers. This one says, Tencent should stop wasting slots on India. What?
How is that a wasted slot? If we go by your logic, then they should stop inviting regions and teams that are lower than India region. That is, if anything, I'm hoping they continue inviting India so they can continue to improve and continue to get better, just like other regions have throughout the years that India hasn't been participating at PMGC. So stop with the stupid comments. Come on now. I don't know if it's because you guys don't like the country, don't like the players, whatever the reason it might be. But if this is what you think should happen, maybe unfollow me. Related to this PMGC, but from India since 2018, which player you like that dominate? What? Bro, we're doing so good there. From 2018, I gotta give props to Scout. Everybody respects him internationally for a reason, because when that man was playing internationally, not recently, like back then, he would pop off. Another one is Jonathan. Man's been popping off for a long time. I remember meeting him in Malaysia, 2019. Awesome guy. That's why I don't understand why people thought I was hating on him, because I showed a bad clip. You fucking weirdos. I like the player. But yeah, those two would have to be Scout and Jonathan.